सबसे पहले आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम कलअदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत के आगाज पर ही वक्फा कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की आज की अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर होगी या नहीं, फैसला मुशावरत के बाद होगा। समाअत लाइव नशर करने से मुतालिक फैसला करने के लिए समाअत में वक्फा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच में शामिल जजेस आपस में मुशावरत करने चैम्बर में चले गए। जस्टिस अतर मिनल्ला ने समाअत लाइव नशर करने की हिमायत कर दी। कहा केस पहले लाइव चलता था तो अब भी लाइव चलना चाहिए। ये केस अवामी मफाद और दिलचस्पी का है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा केस टेक्निकल है, इसमें अवामी मफाद का मामला नहीं। बानी पीटीआई वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश हुए हैं। T20 वर्ल्ड कप के सबसे बड़े मुकाबले पाक भारत टाकरे पर सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र न्यूयॉर्क इंतजामिया ने मैच के लिए सिक्योरिटी बढ़ा दी है। हुकाम के मुताबिक पाक भारत मैच से मुतालिक धमकी आमेज रिपोर्ट्स का अब तक कोई सबूत नहीं मिला। गवर्नर न्यूयॉर्क के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया है कि सूरत हाल की मुसलसल निगरानी की जा रही है, अवाम की सलामती को कोई खतरा लाहक नहीं। गवर्नर न्यूयॉर्क का कहना है कि सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। पुलिस को सिक्योरिटी बढ़ाने का कह दिया गया है। न्यूयॉर्क में पाक भारत मैच के लिए सिक्योरिटी का मसला सर उठाने लगा। न्यूयॉर्क में 9 जून को होने वाले वर्ल्ड कप के सबसे बड़े मुकाबले से कबल सिक्योरिटी खदशात सामने आने लगे हैं। धमकी आमेज रिपोर्ट्स के सामने आने के बाद सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला किया गया। न्यूयॉर्क इंतजामिया ने पाक भारत मैच के लिए सिक्योरिटी बढ़ा दी। न्यूयॉर्क गवर्नर ऑफिस ने बयान जारी किया है कि धमकी आमेज रिपोर्ट से मुतालिक अभी कोई सबूत तो नहीं मिला, लेकिन इसके बावजूद एहतियाती तदबीर कर रहे हैं। सूरत हाल को मॉनिटर किया जा रहा है। इंटेलिजेंस के मुताबिक इस वक्त शायकीन की हिफाजत को कोई खतरात नहीं है। न्यूयॉर्क में 3 से 12 जून तक वर्ल्ड कप के 8 मैचेस खेले जाएंगे। रियासत की गवर्नर कैथी होचल का कहना है कि इंतजामिया कई माह से सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए कोशा है। कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ काम कर रहे हैं और सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए न्यूयॉर्क स्टेट पुलिस को कह दिया है। पूरे इवेंट की निगरानी की जाएगी और मुकम्मल स्क्रीनिंग का अमल होगा। दूसरी जानिब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का कहना है कि पूरे टूर्नामेंट के दौरान सिक्योरिटी को मजबूत बनाया जाएगा। न्यूयॉर्क वेन्यू की सिक्योरिटी को भी दीगर वेन्यूज की तरह मजबूत बनाएंगे। हर किसी की सिक्योरिटी और हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। मेजबान ममालिक की अथॉरिटीज के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। न्यूयॉर्क में भारत ने 4 जबकि पाकिस्तान ने 2 मैचेस खेलने हैं। वाज़ेह रहे कि T20 वर्ल्ड कप के दौरान न्यूयॉर्क में हमले की धमकियों से मुतालिक रिपोर्ट सामने आई थी। कराची में सुबह सवेरे गुरु मंदिर के करीब कार पर फायरिंग से 2 भाई जाम बहक और 2 जख्मी हो गए। गाड़ी में मौजूद एक भाई बाल बाल बचा। एसएसपी जमशेद क्वार्टर्स अलीना राजफर ने बताया कि वाकया जाती दुश्मनी का लगता है। मकतूलीन पेशी पर अदालत जा रहे थे, मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। तफसीलात बताएंगे काशिफ मुश्ताक। गुरु मंदिर के करीब मोटरसाइकिल पर सवार मुलजिमान ने घात लगाकर काले रंग की गाड़ी पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में गाड़ी में बैठे 5 अफराद में से 2 मौके पर जाम बहक और 2 शदीद जख्मी हो गए। ऐनी शाहिद के मुताबिक फायरिंग की आवाज सुनकर वो गाड़ी के करीब आया। 8 अफराद थे जो स्ट्रेट फायर कर रहे थे। उसके अलावा एक बंदा उनसे कैसे गिर गया, निकल गया, वो उनसे फरार हो गया। ये गाड़ी में गोलियां लगी हुई थी तो वो गाड़ी चल रही थी, क्योंकि ये गाड़ी ऑटोमेटिक है। वो ये समझ रहे थे कि गाड़ी में कोई जिंदा है। वाकई की सीसीटीवी फुटेजेस में 3 मोटरसाइकिलों पर सवार 6 मुलजमान को गाड़ी के करीब आते और फायरिंग करते देखा जा सकता है। फुटेज में मुलजमान के चेहरे भी वाज़ेह देखे जा सकते हैं। एसपी जमशेद क्वार्टर अलीना राजपर का कहना है कि मकतूलीन सगे भाई थे। वाजिद और शान कराची के इलाके लसबेला के रिहायशी थे और कत्ल के मुकदमे में पेशी पर अदालत जा रहे थे। वाक़े के वक्त कार में 5 भाई सवार थे, जिसमें से 2 जाँ बहक, 2 जख्मी और मौजाना तौर पर एक भाई मुकम्मल महफूज रहा। हतमी तरीके से नहीं कहा जा सकता कि क्या है, लेकिन जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक हमें लग रहा है कि ये टारगेटेड था। इनकी कोई दुश्मनी आपस में चल रही थी, जिसको हम अभी वेरीफाई कर रहे हैं। उस वजह से ये इंसिडेंट हुआ है। हुकाम के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुलजमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जबकि वाक़े में बच जाने वाले अफराद के बयान लिए गए हैं और मुख्तलिफ पहलुओं से केस की तफ्तीश शुरू कर दी गई है। ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद लाशें अस्पताल से वुरसा के हवाले कर दी हैं। कैमरामैन अदनान हैदर, मोहम्मद साजिद और साथी रिपोर्टर शवाला असलम के साथ काशिफ मुश्ताक, जियो न्यूज़ कराची। अभी बराह रास्त देखिए, पाकिस्तान और आज़रबाईजान के वज़राए ख़ारजा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। Islamic Cooperation Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia, where Azerbaijan will hold a chairmanship for 2024-2025.
2026, and Economic Cooperation Organization, to name a few. Dear colleagues, in comparison with the full-fledged Azerbaijan-Pakistan political dialogue, the huge potential for the development of our bilateral economic and trade relations still remains untapped. We have to invigorate our economic cooperation and make it more comprehensive, considering joint investment projects in energy, information technologies, pharmaceuticals, heavy and light industry, chemistry, agriculture, information technologies, tourism, and transport. We believe that the next 8th session of the Azerbaijan-Pakistan Joint Intergovernmental Commission, to be held in Islamabad later this year, will further add impetus to economic cooperation. Moreover, we invite Pakistani business representatives to consider the opportunities provided by the international transit corridors passing through the territory of Azerbaijan and the Baku International Sea Trade Port. In the same manner, our Pakistani partners can benefit from favorable conditions and privileges offered by the Alat Free Economic Zone. Additionally, direct flights between our countries contribute to the expansion of tourism and people-to-people contacts. Currently, there are 6 flights per week from Baku to Islamabad, Lahore, and Karachi. Last year, the number of Pakistani tourists visiting Azerbaijan reached 55,000. In the first 4 months of 2024, the number is close to 20,000. Hosting the 29th session of the UN Conference of the Parties to the UN Framework Convention on Climate Change, COP29, by Azerbaijan in 2024 will also create additional opportunities for our cooperation in clean energy and green transition related areas. Last but not least, today we pleasingly mentioned social projects implemented in Pakistan by the Hyder Ali Foundation and emphasized the importance of expanding humanitarian, cultural, and academic exchange between our brotherly peoples. Furthermore, cooperation between higher education institutions and cultural centers of the two countries, as well as scientific research institutions and think tanks, is of utmost importance. We are glad that various cultural and language centers operate both at Azerbaijani and Pakistani educational institutions. Ladies and gentlemen, Azerbaijan has always appreciated Pakistan's firm political and moral support to Azerbaijan during the past Armenia-Azerbaijan conflict, the 44-day patriotic war, and afterward. Our position on the issue of Jammu and Kashmir has always been consistent as well. Azerbaijan supports the peaceful solution of this problem based on the norms and principles of international law and relevant resolutions of the UN Security Council, as well as with full respect for international humanitarian law. Today, I briefed my colleague, Minister Ishaq Dar, about the post-conflict situation in our region, Azerbaijan's rehabilitation and reconstruction work in the liberated territories, as well as the long-standing landmine threat that challenges these efforts. The recent agreement on the delimitation of a certain portion of the border between Azerbaijan and Armenia, and the return of long-time Armenia-occupied 4 villages to Azerbaijan positively contributes to the normalization track. Azerbaijan is committed to the peace process, and we hope that it will yield positive results for a prosperous and secure region for all countries. Dear Mr. Minister, I would like to express my confidence that this visit will be a step forward to the further development of friendship and strategic partnership relations between our brotherly countries. I thank you once again for your kind invitation and warm hospitality. Thank you. Excellency, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and very good morning. It gives me immense pleasure to host in Pakistan my very dear brother, His Excellency Geo News, Foreign Minister of Republic of Azerbaijan, and his delegation. Pakistan and Azerbaijan are bound by common cultural and civilizational links that form a solid foundation of ties between our both brotherly countries. Our strategic and economic relations are characterized by regular high-level exchanges and dialogue, including at leadership level. Since assuming office, I have been in regular contact with my Excellency, with my brother Foreign Minister, on bilateral as well as regional and international matters of mutual interest. I had met him
recently on the sidelines of Nuclear Energy Summit in March 2024, held in Brussels, as well as on the occasion of OIC Summit, which took place in May 2024 in Banjul, Gambia. And recently we met informally in Tehran, when we went for condolence of the sad, news of former President of Iran, Dr. Raisi. In the extensive talks today, Foreign Minister, Excellency, and I discuss all aspects of our bilateral relationships. We will further enhance our multifaceted cooperation in trade, investment, connectivity, energy, and defense. We are taking measures to increase bilateral investments, especially in the energy sector. The joint working group on the energy will be critical in promoting cooperation in the energy sector. We are encouraged with the results of the first meeting of the joint working group, which took place on 21st of May 2024. Ladies and gentlemen, we will enhance parliamentarian exchanges. We will strengthen cultural cooperation and promote people-to-people exchanges, including between students, academia, businessmen, and tourists. Our two countries will bolster cooperation in climate action and renewable energy sector. We congratulate our brother country, Azerbaijan, for winning the bid for hosting COP29 event in the beautiful city of Baku. In our meeting today, I told His Excellency the Foreign Minister that Pakistan will fully support Azerbaijan during its presidency of COP29. We also discussed our cooperation at multilateral fora and regional and global developments, including the concerning developments in Gaza. Both our countries are firm supporters of multilateralism and to uphold the international law. Pakistan and Azerbaijan have a long history of collaboration at multilateral fora. We would continue to support each other in the future as well, including at OIC and ECO. We appreciate Azerbaijan for its consistent and principled stance on the Jammu and Kashmir dispute as a valued member of OIC contact group on Kashmir. Azerbaijan's stance is based on internationally recognized principles of sovereignty and territorial integrity in accordance with the United Nations and Organization of Islamic Countries resolutions. Pakistan has always stood for the sovereignty and territorial integrity of Azerbaijan. Pakistan considers Karabakh as the sovereign territory of the Republic of Azerbaijan. We congratulate Azerbaijan on restoring its sovereignty on Karabakh. Pakistan appreciates and commits fully support to Azerbaijan peace efforts and dialogue process for normalization. Excellency, thank you again for coming to Islamabad. I look forward to working closely with you to strengthen our bilateral relations for prosperity and benefit of our both countries, and also take this opportunity for your great support for our candidature as the non-permanent member of the United Nations Security Council for the election which is going to be held on 6th of June next month. So thank you again. You're very kind, and God bless you. We'll go to the Q&A. We'll begin with Ms. Nimra Ahmed from PTV. Thank you, Madam. Namra Sohail from Pakistan Television. My question is to Excellency Mr. Can you hear me now? आवाज नहीं आ रही सर देखो यार ठीक जी please go ahead. Sir, my question is to you. Mr. Foreign Minister, you've made your statement about extensive statement on government-to-government contacts between the two brotherly countries. My question to you is, what about what are we doing to promote people-to-people exchanges between the two brotherly countries of Pakistan and Azerbaijan? Well, there are different levels of engagements.
Parliamentarians exchanges are there. I think in June next month, the Speaker of the National Assembly would be visiting Azerbaijan. The students to students exchanges are already there. We have a number of students which study in Azerbaijan, particularly in Baku, and that includes medical students. On the tourist side, Azerbaijan had around 55,000 Pakistani visitors last year in 2023. So you see, government-to-government agenda is always different, G2G. B2B agenda is also very relevant. And we have already discussed how to enhance our trade volume, how to upgrade our economic connectivity and our economic cooperation. And we both agreed that the depth of our relationship and our sincere affection for each other does not reflect the volume we have in terms of trade. So I remember when about a decade ago, when I went to Baku to hold the joint ministerial meeting, the Intergovernmental Commission, what we call, and representing Pakistan, I had the privilege and prerogative of calling on His Excellency, the President of Azerbaijan. And I had requested and flagged that there is a great scope of rice exports from Pakistan to Azerbaijan. And I was thrilled when I got the news that His Excellency, the President, waived the duty, import duty in Azerbaijan of Pakistani rice. Now it is up to our own people, the private sector, the business community, the Rice Export Association of Pakistan, to take initiative, avail this great economic benefit. So you see, there is a long agenda we have. We are going to work together, and I have requested my brother, although I am in foreign affairs, but we both have to handhold the business community and increase the volume of business. So we are on it, both of us. Abdullah Moment, Dawn News. My question is from Foreign Minister Azerbaijan. Excellency, developing countries have great hopes from COP29, which will be held in Baku, Azerbaijan. At COP27 and 28, important achievements were made in setting up in loss and damage fund, which is a major demand of the developing countries. So what can developing countries expect from COP29? Thank you. Thank you for your question. You are absolutely right. The hosting and COP29 presidency is a great responsibility and at the same time, of course, a challenge for Azerbaijan. Relating to your question, Azerbaijan is also a part of the developing world. We very well understand, of course, the challenges of developing world. We were the very strong advocates of global South interests during 4 years of our chairmanship in non-aligned movement. But at the same time, we also should take into account that the COP presidency has, some specific. Your role as a COP president is to navigate among 198 parties, because in order to get the successful outcome documents, you have to get a consensus among all parties. Some of them are part of the developing world, some of them are part of the developed world. And in order to keep this role in a right way, you have to be inclusive, you have to be neutral and transparent. At the same time, we believe that the Azerbaijani co-presidency, this is a great, let's say, news and opportunities for the developing countries, because, as I said, we very well understand the challenges of developing countries, and of course, all of them has their own challenges. We are very well aware about the challenges of Pakistan. I mean, from a climate change point of view, we remember the recent devastating flood in Pakistan. And from this perspective, of course, Azerbaijan will do its best. So there is the outcome documents provide
let's say, necessary resources. I mean both financial resources in order to tackle these challenges for the developing countries, including Pakistan, in order to help to, let's say, to promote adaptation needs of these countries, early warning systems create, and other means of, support, meaning both technical and training capacities in the relevant, let's say, areas. And at the same time, of course, we are hopeful that Pakistan will also help us in terms of, during the negotiation processes, so that the Baku COP will be the really true, the really success story. I just add a few words to what my Excellency brother said. I have flagged to my brother and to his delegation, the situation of Pakistan vis-a-vis climate change. Our emissions are less than 1%, and we are one of the most 7 vulnerable countries on the globe vis-a-vis climate change. I have also flagged to my dear brother that the flash floods 2022 caused $34 billion worth of losses to Pakistan, unfortunately. This was worked out not by Pakistan alone, but UNDP, Asian Development Bank, EU, World Bank, etc. So you see the deal with this, this menace, I would call, the climate change issues, you need climate finance. And we both agreed that we should work very hard. As Azerbaijan has the chair and presidency, we should try to mobilize the resources. It's easy to say that climate, change affected countries should go for what they call 4RF based, constructions and rehabilitation and resilient particularly. But it needs money, it needs finances, huge finances. Pakistan has afforded, but despite a very meaningful, but I would say relatively small, commitment from global community in Geneva post-floods. We are still, looking after and taking care of all those, post-climate works and reconstruction, rehabilitation work. So what we need is that on climate change, a subject, we should all get together, particularly the developing countries, and make sure that a very, robust fund is available. The multilateral development institutions are there in case of, God forbid, this calamity. I'm not talking only Pakistan. Anybody who suffers because of the climate change, I think it is a fair expectation from the developing countries and suffering country particularly to have all other countries, particularly those who contribute more in this emission business, to contribute financially so that to take care of the problem, financial problem at least, as a consequence of the climate change. Please, thank you. Mr. Khalid Mahmood, Express News. My question to Dar Sahab. Dar Sahab, the situation in Gaza is deteriorating daily basis. What can be done to end this war? Do you discuss this issue in the meeting? We have discussed this issue in detail, not only in today's meeting. पाकिस्तान और आज़रबाईजान के वज़राए ख़ारजा इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अभी एक ताज़ा खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम का लदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत बराह रास्त दिखाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। इसकी तफसील जानते हैं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी से। जी बताइए अब्दुल क़य्यूम। जी हाँ, नैब तरामीम का लदम करार देने के खिलाफ जो वफाकी हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपीलें हैं, इसमें बानी PTI ने की तरफ से, बल्कि जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत थी उसकी जानिब से एक दरख्वास्त दाखिल की गई थी कि ये जो कार्रवाई है, अदालती कार्रवाई, इसको लाइव दिखाया जाए। तो उस पर जो है वो आज जब ये समाअत हुई तो जस्टिस तरमिनल्ला ने जो है वो समाअत को लाइव नशर करने के हवाले से हमायत की और उनका कहना था कि केस पहले भी लाइव चलता था तो अब भी लाइव चलना चाहिए, ये केस अवामी मुफाद और दिलचस्पी का है। एडवोकेट खैबर पख्तूनख्वा का ये कहना था। इस पर जो है वो चीफ जस्टिस काजी फैसला ने कहा कि किसी केस जो है वो ये टेक्निकल नौयत का और इसमें अवामी मुफाद का मामला नहीं है,
और इसके बाद जो है वो जब ये दो राय सामने आई तो उसके बाद अदालत जो है वो उठ गई और उसके में तकरीबन 48 मिनट तक जो है वो वक्फा हुआ और वक्फे के बाद जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 5 लार्जर बेंच दोबारा आया कमरा अदालत के अंदर और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये कहा कि हमने आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ा आप लोगों को, उसके ऊपर हम माजरत करते हैं। उनका ये कहना था कि क्योंकि ये दरखास्त जो है वो इस तरह के मुकदमे में पहली मरतबा आई है तो इसके ऊपर तफसीली डेलिब्रेशन जो है वो की जानी चाहिए थी, तो इस पर डेलिब्रेशन की गई हैं और अब बेंच ने जो है वो इस खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से लाइव स्ट्रीमिंग की जो दरखास्त है वो 4-1 से मुस्तरद कर दी है और चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ये कहना था कि जो फैसले से जस्टिस अतमिनल्लाह जो है वो उन्होंने इख्तलाफ किया है, जिसके बाद अब दोबारा जो है वो अदालती कार्रवाई शुरू हो गई है। इस तरह से जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने लाइव स्ट्रीमिंग की दरखास्त की थी वो दरखास्त 5 लार्जर बेंच ने अब अक्सरियती फैसले से मुस्तरद कर दी है। जी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी आपने आगाह किया, शुक्रिया आपका। चीफ जस्टिस के मुताबिक लाइव स्ट्रीमिंग की दरखास्त 4-1 के फैसले से मुस्तरद की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम का लदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत बराह रास्त दिखाने की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया है। याद रहे एडवोकेट जनरल KPK की लाइव स्ट्रीमिंग की दरखास्त दायर की गई थी जिसे अब मुस्तरद कर दिया गया है और चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि लाइव स्ट्रीमिंग की दरखास्त 4-1 के फैसले से मुस्तरद की गई है। नैब तरमीम का लदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत बराह रास्त दिखाने की जो दरखास्त दायर की गई थी एडवोकेट जनरल KPK की जानिब से, अब ये दरखास्त मुस्तरद कर दी गई है। 4-1 के फैसले से इसे मुस्तरद किया गया है। लाइव स्ट्रीमिंग की दरखास्त थी, चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 4-1 के फैसले से इसे मुस्तरद किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम का लदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत बराह रास्त दिखाने की दरखास्त को 4-1 के फैसले से मुस्तरद कर दिया है। एडवोकेट जनरल KPK लाइव स्ट्रीमिंग की उन्होंने दरखास्त दायर की थी जिसे मुस्तरद कर दिया गया है और चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि लाइव स्ट्रीमिंग की दरखास्त 4-1 के फैसले से मुस्तरद की गई है। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने फैसले से इख्तलाफ किया है, ये भी कहा है चीफ जस्टिस ने और कहा कि लाइव स्ट्रीमिंग की दरखास्त 4-1 के फैसले से मुस्तरद की गई है। एडवोकेट जनरल KPK की लाइव स्ट्रीमिंग की दरखास्त को मुस्तरद किया जाता है। लाइव स्ट्रीमिंग की दरखास्त 4-1 के फैसले से मुस्तरद की गई है। नैब तरमीम का